Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the gravitational field intensity. Okay, so gravitational field intensity. So it is equals to the gravitational force, the value of gravitational force in per unit mass. So we can say that it is equals to the gravitational force in per unit mass. Okay, and it is denoted by capital I. So gravitational field intensity. So let me consider this is mass of Earth, radius of Earth, and it's a mass which revolve around this surface of the Earth, just like this. So its gravitational field intensity I is equals to F by M, where F equals to G MEM upon RE square. So I equals to G MEM upon RE square by M. So it will be written as G ME upon RE square. ओके, सो एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था इसमें G equals to G ME upon RE square. So we can say that this intensity also the similar like gravitational gravity. Okay, gravitational acceleration. So according to this, its unit will be, we can write this Newton per kg, or we can say that meter per second square, and its dimension is LT minus 2, and it is a vector quantity. Okay, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. So we can say that the gravitational field intensity is equals to the gravitational force in per unit mass of any body which revolves around the surface of Earth is called gravitational field intensity. I equals to F by M, and the value of force is Gm1 m2 by r square. According to this, Gmem upon r square. So putting this value, so I equals to Gme by r square. Its unit is Newton per kg or meter per second square. So, similar, just like gravitational acceleration. So its dimension is LT minus 2, and it is also a vector quantity. So it is a vector quantity. So we can also resolve just like an application based on it. Let me consider two masses M1 and M2 which placed at some length apart, just like R, where the resultant intensity will be 0 of this line joining. So let me consider this is a point where I result will be 0. So this question will be given just like two masses just like M1 and M2 which are placed at a distance R. So where of this line joining resultant intensity will be 0. Resultant gravitational field intensity will be 0. So let me consider this is a point where resultant intensity will 0. So this length is x from M1. So it will be R minus x. Okay. So in this way, this is a mass M1. This is a mass M2. This length is R, and this point is P, where I result equals to 0. This length is x. So according to this is R minus x. Okay. So both are masses. So if the direction of intensity due to this is this IA, so in the same way this will be also outward IB. Okay, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी है. सो I रिजल्ट इक्वल्स टू IA माइनस IB. क्यों? दोनों ही P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है? अपोजिट है ऐसे, और रिजल्टेंट 0 है. सो IA माइनस IB इक्वल्स टू 0. इन दिस वे IA इक्वल्स टू IB, and we know that I equals to Gm upon r square. So according this IA, this Gm1 upon x square and G
m2 upon r minus x square. Okay, solve this. It will be equals to m1 by x square equals to m2 upon r minus x square. So r minus x by x होल स्क्वायर, लेंथ एक साइड में कर दिया और मास एक साइड में. So r minus x by x, taking square root both side, so it will be equals to m2 by m1. So r by x minus x equals to root m2 by m1. So it will be equals to 1 plus under root m2 upon m1, और under root m1 plus under root m2 upon under root m1. In this way we can say that x equals to r under root m1 upon under root m1 plus under root m2. देखिएगा, जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो r तो रहेगा, ऊपर वही वाला मास होगा अंडर रूट के अंदर जिस तरफ से हमने लेंथ मेजर की है. अगर आपने x की वैल्यू m1 साइड से ली थी तो ऊपर m1 होगा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 ही रहेगा. अगर ये वाली वैल्यू x की आपने m2 साइड से लिया होता तो r अंडर रूट m2 हो जाता. ओके, इन दिस वे वी विल सॉल्व द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी. So just we take another example. 100 kg and 10,000 kg, two bodies which are placed at 10 meter apart. 100 kg and 10,000 kg is two blocks placed at 10 meter apart. So first should be resultant intensity of this line joining will be 0. I result equals to 0. So let me consider this is a point P at x, so it will be equals to 10 minus x. According to this, at equilibrium I result equals to 0 और IA equals to IB. ये हमने डिस्कस किया था, ये हो जाएगा IA और ये हो जाएगा IB. तो IA की वैल्यू G इंटू m अपॉन एक्स स्क्वायर एंड IB की वैल्यू G इंटू 10,000 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर. So it will be equals to 1 upon x square equals to 100 upon 10 minus x square, and just we solve this taking square root both sides. So 1 by x equals to 10 upon 10 minus x. After the cross multiplying, 10 minus x equals to 10x. So 11x equals to 10. So x equals to 10 upon 11 meter from 100 kg mass. Okay. अगर x की वैल्यू आपने 10,000 सेलेक्ट किया होता तो उधर से आ जाता. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द लेंथ. ओके, नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. So gravitational potential is equals to work done in per unit mass from carrying from infinite to earth surface. Means potential जो होता है work done होता है per unit mass पर. ओके, कहाँ से कहाँ तक लाने में? इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाने में. So we can say that the gravitational potential is equals to the work done in per unit mass to carrying any body from infinite to earth surface. यानी किसी भी बॉडी को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाने में जो वर्क होता है वो वर्क पर यूनिट मास जो होगा वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एंड यू नो दैट टू कैरिंग फ्रॉम दिस टू दिस, हमने पीछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू क्या आई थी? निगेटिव. सो वी कैन से दैट ओके, whenever we carrying any body from infinite to earth surface, okay, so work will form not to doing on the system but it will be formed by the system. Okay, so it will be negative, or we can also write this, or we can also put this value w equals to minus g m I. We can also write this
So W by M and W is equals to U equals to minus GM EM upon RE. Can write in this way. आप ऐसे भी रख सकते हैं, सिंपली इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख दीजिए, W की वैल्यू निगेटिव होती है तो ऑलरेडी निगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू माइनस GME upon RE upon M. So V equals to minus GME upon RE. It will be negative, and negative sign shows that the work be done by the system, not to be on the system, from carrying any body from infinite to अर्थ सरफेस, यानी इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक किसी भी बॉडी को लाने में वर्क प्राप्त होगा, मिलेगा, ओके, नॉट टू बी डन ऑन द सिस्टम, उस सिस्टम पे वर्क करना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप जानते हैं किसी अगेंस्ट द अंडर ग्रेविटी, जब आप नीचे से ऊपर को क्लाइंब कर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, तो आप थकते हैं ज़्यादा, क्योंकि अगेंस्ट आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ऑन द सिस्टम। लेकिन आप छत से नीचे आना, सीधे जंप कर जाइए तो बीच में आपको ज़्यादा कुछ हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे नीचे आ जाएंगे। सो वर्क डन फॉर्म्ड बाय द सिस्टम, ओके। सो इन दिस वी विल सॉल्व द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वी आल्सो सॉल्व ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट resultant. So let me consider this is second application. This is M1 and this is M2, which are placed at some distance r. So what will be the resultant potential at the midpoint r by 2 r by 2? This is the midpoint. So potential is a scalar quantity. So here potential Vp is equals to Va plus Vb and V is equals to minus Gm by R. So according to this, Vp equals to Va is equals to minus Gm1 upon R by 2 plus minus Gm2 upon R by 2. So it will be equals to minus G upon R by 2 पर आ जाएगा M1 plus M2. This will be the resultant potential because it is the scalar sum, because gravitational potential is a scalar quantity, okay. So in this way we will solve the resultant potential, gravitational potential at a point P, okay. And now I will solve the orbital speed. So what is orbital speed? Let me consider this is a Earth whose mass is me and radius is re, and any satellite, just like a satellite which moves with the orbital speed v naught, means a speed by which any satellite revolve at the surface of Earth at the orbit, we can say that that is the orbital speed. तो कोई भी सैटेलाइट अर्थ सरफेस पर जिस स्पीड से रिवॉल्व करे, या किसी भी सैटेलाइट को यहाँ पर सेटअप करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड हो सरफेस पर राउंड करने के लिए कि वो उस सरफेस पर सेट हो जाए, ओके, दैट minimum speed is equals to orbital speed. We can say also that this is the minimum speed. So we can say that orbital speed is equals to the minimum speed by which any satellites set at the surface of Earth for the revolving, okay. So this is the orbital speed, okay, or the orbital speed is the minimum speed by which any satellite revolves at the surface of Earth. So this is orbital speed, okay. कोई सैटेलाइट इस अर्थ की सरफेस पर जितनी मिनिमम वेलोसिटी से सेट हो जाए और रिवॉल्व करता रहे सरफेस पर, वो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेनेवर इट रिवॉल्व एट द सरफेस, सो हियर टू masses, this mass is m, small m, so in the circular path, so centripetal force is also equals to gravitational force. So it is equals to mv square by r, so it is equals to mv naught square by re, and this is equals to gmem upon r square. So according to this, v naught square equals to gme
upon RE, or V naught equals to GME upon RE root over. So at any height V naught equals to GME upon RE plus H. ओके, अगर किसी हाइट की बात करें तो ये रेडियस थी, अगर h हाइट की बात करें तो अब ये यहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, RE प्लस h कितनी हो जाएगी, तो अब ये हो जाएगा। एक रिलेशन हम इसमें और प्रूव किए थे कि GME equals to GRE square. So according to this, V naught equals to under root GRE square upon RE plus H. So it is equals to RE under root G upon RE plus H. Okay, and if H equals to 0, then V naught equals to root over, इसको भी अंदर कर देंगे तो GRE बचेगा. So we can say that orbital speed doesn't depend upon the mass of the satellite. In this equation, according to this equation, we can say that the orbital speed doesn't depend upon the mass of satellite. Okay, in this way we will solve the orbital speed. And now we will discuss about the escape velocity. What is escape velocity? Okay, so escape velocity, escape का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी को उसकी सेल से इजेक्ट करना, मतलब जैसे कोई भी बॉडी है अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट की जाए और वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, तो जब प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी कुछ वेलोसिटी गिवन की गई होगी. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी बाय विच एनी बॉडी प्रोजेक्टेड एंड इट रीचेज फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इनफाइनाइट, मतलब वो इनफाइनाइट तक पहुंच सके इतनी वेलोसिटी. सो दैट वेलोसिटी विल बी मिनिमम. अब इतनी नहीं कि वो इनफाइनाइट के अंदर भी कई किलोमीटर्स एंटर कर जाए, कोई मतलब नहीं. ओके, वो अपनी सेल को क्रॉस्ड कर जाए, उतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी. सो दैट वेलोसिटी विल बी मिनिमम. ओके, जैसे किसी भी स्टूडेंट को 10th है, 10th से 11th में आना है, अपनी सेल को क्रॉस करना है, तो उसको रिक्वायर्ड मिनिमम कितनी चीटिंग कराई जाए जिससे कि वो पास हो जाए. अगर कमज़ोर स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम कितनी मतलब चीटिंग करा दी जाए, कितना सोल्यूशन मिल जाए तो उतना दिया जाए जिससे कि वो पास हो सके. इतना नहीं दिया जाएगा कि उसकी मेरिट आ जाए. ओके, सो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मिनिमम रिक्वायर्ड solution, so minimum required velocity. Okay, so escape velocity is equals to the, this is mass of earth, this is radius of any body which projected with velocity v. So this is the minimum velocity by which it projected from earth surface. Okay, and it reaches at infinite. ये कहाँ पर आ जाए, infinite पर आ जाए. So this is the escape velocity, required minimum velocity by which any body or any satellite projected from the earth surface and it reaches at the infinite and never be come back. Okay, so this velocity or this required minimum velocity is known as escape velocity. मतलब वह ऐसी रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी भी सैटेलाइट या किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए और वो अपनी सरफेस को लीव करके इनफाइनाइट पे चला जाए और कभी कम बैक ना करे. दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी. तो देखिएगा, हमें एक चीज ये डिस्कस किया था, जब किसी बॉडी को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाए थे तो ये एनर्जी यू निगेटिव थी, -GMEm/RE. लेकिन अब की बार हमने किसको यहाँ से इनफाइनाइट तक ले गए हैं, तो अब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. और यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, 1/2mv² में. सो दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस. सो k इक्वल टू u 1/2mv².
VE square equals to GMEM upon RE square. Oh sorry, RE. So it will be equals to VE square equals to 2GME upon RE. Then VE equals to root over 2GME by RE. And we know that GRE square equals to GME. So RE square को हम दो बार लिख दें RE इंटू RE में. So GRE equals to आ जाएगा GME अपॉन RE. So पूरी GME अपॉन RE की जगह क्या लिख सकते हैं आप? VE equals to under root 2GRE. So in this way we can also say that the escape velocity also doesn't depend upon the mass of the satellite or mass of the body. हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी के मास पर escape velocity भी डिपेंड नहीं करती. ओके, एंड नाउ we will discuss about the relation between VE and V naught. So this will be equals to the relation between VE and V naught. So we know that VE equals to root over 2GRE and V naught equals to root over GRE, and the ratio VE by V naught equals to under root 2. So we can say that VE equals to under root 2 V naught, or VE equals to 1.414 V naught. Okay. And now we will discuss about the time period of the satellite. Time period of the satellite. So let me discuss here. This is mass of Earth and this is radius of Earth. Any satellite is revolving at a height h from the Earth's surface. So its complete length is RE plus h with the speed of orbital speed V naught. Okay. So according to this, you know that time equals to length upon speed is distance upon speed. So distance is 2 pi r circumference. You can also say that circumference upon speed, and this is equals to 2 pi r e plus h. 2 pi r upon V naught in terms of height GME upon r e plus h. So root over GME upon r e plus h. So it can be written as 2 pi r e plus h under root r e plus h, and GME we can also write it GME equals to GRE square. So at height GRE plus h whole square. So under root GRE plus h whole square. So it can also equal 2 pi RE plus h under root RE plus h upon RE plus h root over G. So this will be cancelled out and it will be equals to the T equals to 2 pi under root RE plus h upon G. Okay, and if h equals to 0, then T equals to 2 pi under root RE upon G. So this will be the time period of a satellite which revolves around the surface of Earth with the some orbital speed. Okay.